A cheerful good morning and a very warm welcome to all of you present today in the science class. Once again, I welcome you back on behalf of Sunbeam Academy. Starting with our today's discussion, before going ahead, again I would like to state the same things which I have been continuously repeating since last few months. That is, all of us we are very much aware regarding the number of active COVID cases of the new mutant uh, strain, basically that is the new variety of this COVID-19 virus. So as the number of cases they are rising, especially in the foreign countries and at the same time in our country as well. If you would have gone through the newspapers of yesterday, so around 6 peoples they have been caught in Lucknow who have returned from UK or London somewhere, okay, and they have been tested positive for this new mutant variant. Okay, so I request everyone here to please pay utmost care as well as attention so that none of us again become a part of this pandemic situation, and let us try to eradicate it from A to Z. Okay, not even a single stream would be left behind, and let's hope for the best. Okay, so that our normal physical life would be normalized. We can just have the same enjoyment which we were having earlier, or we may just resume our original physical activities which we were doing around few years around 1 year back. Okay, so let us start with today's class. Again, I hope all of you would have completed the worksheets which have been provided to you. Okay, one more thing, I forgot to provide you those worksheets into the homeworks. So I hope you would have taken the screenshots or the pictures. Don't worry, today I'll be providing you with all the 4 worksheets, 2 of yesterday and 2 of today. And tomorrow again I'll be providing you with the worksheets of your last 2 worksheets, and in this way we will be completing 6 worksheets related to 2 chapters, that is your simple machines and air and water. Okay, so let us start with this chapter without any delay, and at the same time the same things which we have done yesterday, today also we are going to do the same thing. That is, first and the foremost thing, we are going to go ahead with the changes in environment, that is page number 2, that is the second page of this chapter. We will be going ahead, followed by the revision of the chapter air and water, and finally we'll be going ahead with the worksheets which we have planned, or which has to be provided to you. Okay, so let us start with this. So we have here as the most possible thing, that is sharing you the syllabus first and the foremost thing, and followed by other things. Okay, so if you can see here, that is from December to January, that is few more days left here. Today is 29th. Okay, so just 2 more days for this December to end, followed by January. Okay, so we have one complete month in which most probably our entire 1 week or 10 days is going to be utilized in your examinations and your holidays for the new year, that is from 1st to 3rd most probably, or maybe something else, no idea. Followed by we are on this chapter, changes in our environment, and after this we will be having one more chapter, that is your natural disasters left behind. Okay, so these are the things which we have to do it. Okay, and please don't forget that these 2 are the chapters, that is your periodic test 2 lesson 11, that is your simple machines and air and water, which is going to be a part of your periodic test 2, which is going to start from 4th of December, sorry 4th of January. ओके, सो 4th of January से जो आपके पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है, उसमें यही 2 चैप्टर्स आएंगे आपके सिंपल मशीन्स एंड एयर एंड वाटर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ऑलराइट, let us continue with our chapter changes in our environment. I'm not providing you the PDF and everything in the school app, just because in order to avoid some kind of confusions. Okay, we will be just having this after your periodic test 2, you will be getting this PDF into your e-learning app, that is the school app. Okay, so I hope this is the page number is here, no idea regarding the page number. Okay, I'm sorry, no, I'm sorry. Okay, I hope this is the second page only. Okay, let me have a cross check of this part. The screen has been shared. All right, changes in environment, this is given on page number 127.
Okay, so in page number 127, all right, this is the second page. Okay, if you go ahead with this, most of the things I have already told you, but let us see here. Okay, before this, sorry, this one, this, if you remember yesterday I told you, that is what are the activities which are going to harm the environment. So we have the first one, littering, hunting animals, digging soil, taken in whichever sense you want, and cutting down of trees. So first, third, cutting down, and your fourth one, hunting animals. All these things, they are going to harm the environment in one or the other way. These are the things which we are going to learn in this chapter. Impact of humans on environment, greenhouse effect, global warming. These are the two impacts of the humans on environment only. Protecting the environment, what are the things which we can do. Here I told you what is the meaning of this environment is there. It is the combination of living and non-living things and their interactions between them. All right, I told you that is living things, they are known as biotic components, whereas non-living things, they are known as abiotic components. Moving ahead with this, human activities and the environment. So out of all the living things, only human beings change the environment to suit their needs. That is, जितने भी ऑर्गेनिज्म सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स ही ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को. बाकी और सारे ऑर्गेनिजम्स भी कॉज करते हैं, बट नॉट अप टू दैट मच हाउ मच ह्यूमन बींग्स आर बीइंग डूइंग इट. ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज दैट इज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली एंड सो आर इट्स नीड्स फॉर फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड अदर थिंग्स. In order to provide everyone with all these things, we change grasslands into farmlands. We cut down forests to build houses and factories. There are more vehicles on the road today than ever before. All these activities harm the environment. Okay, so in this way, all these things are there. If we go ahead with this, okay, that is our next page. Sorry, this one. Okay. Right, we have some of the images here. Let us have the discussion over them first. So the very first thing, that is building houses. This is the most common thing which is going on throughout this entire India at a very rapid rate. ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें, आप महमूदगंज एरिया, सिगरा एरिया, दुर्गाकुंड, शिवपुर, ठीक है, पांडेपुर, ठीक है, हल्का सा आप बनारस के बाहर जाइए, आपको मैक्सिमम जगह आपको कंस्ट्रक्शंस ही कंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे, और इवन इंक्लूडिंग योर एंटायर विद इन द सिटी एज वेल. इन वाराणसी ऑल्सो, so big towers are being constructed at a very rapid rate, okay, without thinking about the consequences, without taking into considerations the eco-friendly measures and everything. ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से घर बनाए जा रहे हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट को एकदम से किनारे करके, ठीक है, मतलब कोई वो नहीं है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, नहीं बचाना है, जो भी है. ठीक है, मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे ये और भी ज़्यादा तेज़ी से आपको देखना है तो आप थोड़ा सा एनसीआर का रीजन सर्वे कर लीजिए, या फिर उधर के थोड़े से पिक्चर्स आप ले लीजिए, तो आपको मैक्सिमम जगह पे कुछ इसी टाइप के टावर्स इन कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, आपको दिखाई देंगे. ओके, सो द थिंग इज़ दैट हमें घर बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, अगर आपको करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ही फ़ायदा है. इतने बड़े बड़े टावर्स, इतने पैसे लगा करके, ठीक है, आप सब कुछ कर लीजिए. जिस दिन अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 4 या 5 रहेगा, ठीक है, उतने में ही ये सारी की सारी बिल्डिंग कोलैप्स होने की ताकत रखता है. एक भी नेचुरल कैलामिटी आएगी, दिस एंटायर स्ट्रक्चर विच इज़ टेकिंग सो लॉन्ग टू गेट रेडी विल बी गेटिंग डिमिनिश्ड, will be getting destroyed within few seconds or within few minutes. Okay, so this is my humble request from each and everyone to be eco-friendly and please take part in this eco-friendly measures. Okay, the screen has been shared, I think so, of course. Okay, the next picture, if you can see, this is the picture related to your air pollutions. Okay, नाउ एयर पोल्यूशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो देखिए सबकी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है. बट इफ़ यू आर मेंटेनिंग योर व्हीकल एट अ प्रॉपर टाइम, ठीक है, आप प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग करवाते हो अपनी व्हीकल्स को, अपने प्रॉपर टाइम पे आप कार्स की सर्विसिंग करवा रहे हैं, तो देन दे गिव आउट द स्मोक बट एट अ वेरी लिटिल एक्सटेंट. ठीक है, या बहुत कम धुआं देते हैं, या फिर जो स्मोक निकलता भी है तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता है.
और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि आप सभी लोगों के पास कोई ना कोई व्हीकल्स ज़रूर हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए, मेंटेन रखिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू एज वेल कि आप अपने पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि आपके लेवल पे तो अभी नहीं पॉसिबल है कि आप जाके अपनी बाइक सर्विसिंग करवाएं या कार सर्विसिंग करवाएं, बट ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग अपने पेरेंट्स से फोर्सिबली या फिर थोड़ा सा प्रेशर दे करके, ठीक है, ज़रूर टाइम टू टाइम, ठीक है, 1000 किलोमीटर्स या 1500 किलोमीटर्स पे अपनी बाइक्स कार्स की सर्विसिंग करवाइए, जिससे कि वो लोग अच्छे कंडीशन में रहें एंड दे प्रोमोट इको फ्रेंडली मेजर्स एज वेल। नेक्स्ट पार्ट ये है, अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा या फिर कुछ लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे अब, तो आपको कुछ येलो कलर के मशीन्स या फिर एंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कुछ और येलो कलर के पंप्स भी दिखाई देंगे। So that yellow color entire entire structure, that is nothing but your CNG stations। मतलब अब ये हमारे पेट्रोल डीजल्स के अलावा उन्हीं पेट्रोल पंप्स पे आपको CNG स्टेशंस भी मिलेंगे। दैट इज द व्हीकल्स विल बी रनिंग विथ CNG, दैट इज योर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सभी लोग CNG पे स्विच ओवर कर जाइए, तुरंत पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे whenever you get time or try to get some more knowledge related to this CNG, और CNG को promote करिए as compared to your petrol and diesel, because that is not only cost effective, वो खाली आपके पैसे ही नहीं बचाएंगे बल्कि हमारे environment को भी cleaner रखेंगे। तो और इससे पेट्रोल एंड डीजल पे भी हमारे कम प्रेशर पड़ेगा और कम इम्पैक्ट होगा। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज दैट इज द वाटर पॉल्यूशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर पॉल्यूशन बेसिकली, तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये कहीं और का नाला है या सीवेज है, ठीक है, और किसी और वाटर बॉडी में इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। यही सेम कंडीशंस हमारे गंगा रिवर्स की भी है, ठीक है, या फिर आप जितने भी होली रिवर्स हैं, ठीक है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं क्या होगा कि बीच में से कहीं ना कहीं सीवेज आपके मेन रिवर्स में, मेन सीज में, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा ये सी वाटर या गंगा वाटर दे ऑल्सो गेट पोल्यूटेड, जो कि पोल्यूटेड नहीं होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दिस सीवेज वाटर दे ऑल्सो गेट पोल्यूटेड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। यहाँ से खाली अर्थ का ही वेजिटेशन नहीं जाता है, अर्थ के ऊपर प्रेशर भी पड़ता है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे रिमेन स्कैटर्ड, दे रिमेन इनटू आवर सराउंडिंग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रोंकियल इन्फेक्शंस, या फिर जो अस्थमा है, ठीक है, या वेरियस रेस्पिरेटरी डिसीजेस जितने भी हैं, ठीक है, दे ऑल आर possible from due to the presence of these harmful pollutants only. Okay, next if we go ahead with the description part, so we have here that is factories and vehicles release harmful gases into the atmosphere. Factories also release harmful waste into rivers, lakes and seas. The addition of harmful substances causes pollution of air, water and land. One of the effects of environmental pollution is the greenhouse इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं या व्हीकल्स हैं, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है या कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं प्रेजेंट है हमारे इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एकदम क्लीन हो, ठीक है, मतलब जो पॉल्यूशन ही ना कॉज करे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई भी चीज़ जलेगी, ठीक है, बर्न होगी, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वो निकालेंगे ही, वेदर इट इज़ योर व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और बर्निंग अप ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ओके, तो जब भी कोई भी चीज़ें बर्न करेंगी तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलेंगे ही निकलेंगे। बट कंडीशंस क्या है कि क्या पहले फैक्ट्रीज नहीं थी? पहले भी थी। क्या पहले व्हीकल्स नहीं थे, बट लिमिटेड थे, ठीक है, जितनी हमारी ज़रूरतें थी उतना ही था, ना उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। ओके, और ह्यूमंस भी क्या थे, ठीक है, अवेयर थे, ठीक है, इको फ्रेंडली थे, ठीक है, खाली डिस्ट्रक्शन ही नहीं कॉज कर रहे थे। अगर उनको अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना था तो वो करते थे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके वो लोग अपना डेवलपमेंट नहीं करते थे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ, एंड आई होप, ठीक है, कि आप लोग भी
अपने तरफ से जितना हो सकता है आप करिए, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि जस्ट गो एंड स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, मत करिए आप अवेयरनेस, कम से कम आप तो सही करिए। आप मत बताइए किसी को कि ऐसे करो एनवायरनमेंट बचेगा, आप तो बचाइए, आप छोड़िए दूसरों को, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी फैक्ट्रीज हो तो सब में अगर अच्छी चीज़ बन रही है तो उसके वजह से बुरी चीज़ भी निकलेगी ही, ठीक है। वेस्ट निकलना ही निकलना है, ठीक है। जैसे आप खाना ही बनाते हो तो खाने बनाने में भी वेस्ट निकलता है, ठीक है। सब्जी काटते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसे आपको ऑर्गेनिक वेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आप जब रोटी रोटी बनती है, चपाती बनती है, तो उसमें भी आप देखोगे कि फाइन डस्ट पार्टिकल्स या फिर डस्ट और फाइन पार्टिकल, फाइन पाउडर्ड पार्टिकल्स ऑफ द व्हीट फ्लोर, ठीक है, इधर उधर गिर जाता है, उसको फिर आप डस्टबिन में ही फेंक देते हो। तो क्या है, मतलब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेगा ही निकलेगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस वेस्ट को मैनेज करते हैं। अगर पूरे के पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को हम डस्टबिन में डाल दिए तो वो क्या है, अब एक जगह से दूसरे जगह वो बाहर वेस्ट पर्सन कलेक्ट करेगा, फिर उसको सेग्रीगेट करेगा, नहीं सेग्रीगेट करेगा तो कहीं भी इधर उधर फेंक देगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर आपने अपने पॉट्स में या फिर सॉइल में कहीं डाल दिया रहता है तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता और वेस्ट भी रिड्यूस हो जाता। तो ये हमारे ऊपर है, कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव हमें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जब वी आर गोइंग टू बी इन अ ग्रेट ट्रबल, ठीक है, हम ट्रबल में आने वाले हैं। एंड द कंडीशंस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आप देख ही रहे हो 1 साल से क्या स्थिति है, घर से बाहर लोगों का निकलना मुश्किल है, ठीक है। ये वही लोग निकल रहे हैं जो पहले भी ना मास्क पहनते थे, ठीक है, ना सैनिटाइजर्स यूज़ करते थे। ये आज भी वही लोग हैं जो ना पहले सुनते थे ना आज सुन रहे हैं। जो पहले सुन रहे थे वो आज भी सुनते हैं, ठीक है। जो पहले नहीं सुन रहे थे वो आज भी नहीं सुन रहे हैं, ओके। सो दिस इज ऑल द थिंग्स, let us go ahead with this. Okay, I hope the time has been 16 minutes has been already passed, 17 minutes. So let us start with the revision, okay, followed by the worksheets. Okay, so first and the second worksheets we have already done of this chapter, that is your PT2 simple machines, if you remember. ओके ये दो थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है, पहला वर्कशीट्स एंड दिस वाज द सेकंड वर्कशीट्स विच वी हैव डन यस्टरडे, ठीक है। स्क्रीन शेयर है, ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यस्टरडे बाय मिस्टेक द स्क्रीन वाज नॉट शेयर्ड, सॉरी। अभी हम लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है, तो पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ओके, एयर एंड वाटर, ओके। सो एयर एंड वाटर, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, इफ़ यू ट्राई टू को रिलेट दिस both the words, that is air and water, with our changes in our environment chapter. So air and water are what? They are nothing but the abiotic components of the environment, and how both these components they are getting affected. Let us see here. Okay, so the solid form of water present in nature, that is your ice, process by which water changes to water vapor, evaporation. Okay, vapor in the air rises and condenses to form these, that is your condensation. The repeated change of water to water vapor and then back to water in nature, water cycle. This is caused by the movement of air, wind. Human beings need this to breathe. That is oxygen or air. Okay. Next, in addition to food, we need two more things, that is your air and water, out of which air is the most important one, because without this we are not going to survive for even more than a minute or 5 minutes. Okay, so air is all around us, and air forms a blanket around the earth that makes life on this planet possible. This invisible blanket of air is called as atmosphere. So atmosphere kya hai? Basically it is a mixture of gases which is forming a blanket of air on the surface of the earth. Okay, when we are talking about the components of the air, so we have different components, like these are the components of air: nitrogen 78%, oxygen 21%, and argon, carbon dioxide, other gases, methane, and various other, water vapor and everything, all of them they are present only in 1%. Okay,
So starting with the air is a mixture of gases. It contains oxygen that enables us to breathe and live. इसी की वजह से हम लोग आज जिंदा हैं, नहीं तो हम लोग मर चुके होते बहुत पहले ही. It contains carbon dioxide needed by plants. Some other gases present in the air are nitrogen and argon. Air also contains water vapor, dust and smoke. ये सब किस में आ जाते हैं आपके 1% में, सब के सब 1% में, except for your nitrogen and oxygen, which are 78 and 21% respectively. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. It is 78%. Plants need nitrogen to grow well. Okay, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको उस समय भी कि जो मेजर कंपोनेंट है प्लांट्स का वो नाइट्रोजन उनको चाहिए रहता है. ठीक है, कहाँ से मिलेगा नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं आसानी से, पर वो लोग नहीं ले पाते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम कच्चा खाना नहीं खा सकते. चावल दाल सबके घर में है, लेकिन क्या आप बिना उसको बनाए खा सकते हैं, बिना कुक करे खा सकते हैं? नहीं कर सकते. तो वैसे ही नाइट्रोजन भी कुछ ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है एयर में जिसे प्लांट्स लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं. एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू टेक इट, दे टेक द हेल्प ऑफ सम अदर बैक्टीरिया और सम अदर थिंग्स. ओके, जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या है. However, all plants cannot use the nitrogen from the atmosphere directly. Only some plants such as peas and beans can convert atmospheric nitrogen to a useful form in their roots, and other plants get nitrogen from the soil. ठीक है, अब देखिए ये भी क्या, ये डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं. ठीक है, ये they are able to convert atmospheric nitrogen to a useful form just with the help of their bacteria. ठीक है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनके रूट नोड्यूल्स में, जो कि क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इनके रूट्स में प्रोवाइड कर देता है. तब ये लोग भी पा पाते हैं, नहीं तो ये लोग भी नहीं नाइट्रोजन पाते. ओके, नेक्स्ट इफ यू गो हेड, सो अदर प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. मतलब सॉइल में जैसे भी होता है तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स. क्यों? क्योंकि भाई सब सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन ही चाहिए, सबसे बड़ी चीज़. और नाइट्रोजन मिलेगा कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो यूज़ ये लोग नहीं कर सकते. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कीप पैकेज्ड फूड फ्रेश. ठीक है, जितने भी आप ये चिप्स वगैरह देखते हो या फिर पैकेज्ड आइटम जितने भी आप देखते हो, इन देम ऑल्सो नाइट्रोजन इज ओनली फिल्ड. लिक्विड नाइट्रोजन इज वेरी कोल्ड. इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स एंड फूड स्टोरेज यूनिट्स टू कीप आइटम्स फ्रोजन. ठीक है, लैब्स में यूज़ होते हैं, ब्लड बैंक्स में यूज़ होते हैं एंड फूड स्टोरेज यूनिट्स में भी यूज़ होते हैं. क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, द टेम्परेचर इज़ अराउंड -193 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो भी है, लेकिन बहुत है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हियर इज दैट इज योर ऑक्सीजन. दैट इज द लाइफ सस्टेनिंग गैस. इट इज़ 21%. ओके, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल. इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू डू दिस. ठीक है, आपको भी पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू बर्न. अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो बर्न नहीं करेगा. जैसे ये कैंडल किसी ग्लास से या कवर्ड नहीं किया गया है कम्प्लीटली, इसीलिए ये आराम से जल रहा है. लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली एक ग्लास से उसको कवर कर दिया गया. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट, इट हैज़ स्टॉप्ड, दैट इज इट हैज़ एक्सटिंग्विश्ड. ठीक है, ये कैंडल बुझ गई है जस्ट बिकॉज द entire oxygen which was present inside that has been already used up by the candle, and now there is no oxygen left for allowing it to continue burning. Okay, moving ahead with this, we have here that is, while oxygen supports burning, nitrogen controls burning. Had there been no nitrogen in the atmosphere, we would not been able to control fire. अगर नाइट्रोजन जैसे ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो वैसे ही नाइट्रोजन कंट्रोल करता है. और अगर ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नहीं होता तो हम लोग को फायर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती, या फिर हो सकता है हम लोग कभी फायर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते. ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये दिस इज नीडेड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रैपिंग द सन्स हीट दैट एंटर्स द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसका एक एडवांटेज है तो दूसरा डिसएडवांटेज भी है. पहला एडवांटेज यही है कि इट इज़ नीडेड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड, बट लेकिन दूसरा डिसएडवांटेज, इट ट्रैप्स द सन्स हीट दैट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर. क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, भले 1% में 0.03% ही है, बट इट इज़ अ वेरी हार्मफुल गैस एज वेल. ओके, दिस मेंटेन्स द रिक्वायर्ड वार्मथ ऑन द अर्थ. ये अर्थ के सरफेस पे जितनी एक नॉर्मल गर्मी होनी चाहिए वो उसको मेंटेन करके रखता है.
Next we have here, however, burning large amount of fossil fuels releases a lot of carbon dioxide into the atmosphere. This excess carbon dioxide in the atmosphere traps heat from the sun. This can raise the temperature of the earth. ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि क्लाइमेट इमरजेंसी किसी कंट्री ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, शायद जर्मनी या फ्रांस या जापान या कोई एक कंट्री है, मैं आपको बाद में बता दूंगा या फिर मुझे याद आएगा तो कभी बता दूंगा। उसने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने टारगेट रखा है कि बाई 2025 या 30, ठीक है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या फिर इस टेम्परेचर जो है उनकी कंट्री का उसको एनी हाउ कम करना है, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ठीक है, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और वही इमरजेंसी आप देखिएगा आज नहीं कल हमारे देश में भी आएगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव हियर इज दैट इज however burning large amount of fossil fuels releases a lot of carbon dioxide into the atmosphere. This excess carbon dioxide in the atmosphere traps the heat from the sun. This can raise the temperature of the earth. ठीक है, ये चीज़ है। Water vapor, the water from the surface of the rivers, oceans and other water bodies evaporates and forms water vapor in the atmosphere. Water vapor also contributes in trapping द सन्स हीट इनसाइड द एटमोसफियर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर दोनों ही सन की हीट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, अदर गैसेस में सब आ जाते हैं, आर्गॉन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन दैट 1%। Importance of the atmosphere, okay, क्यों जरूरी है? It forms an invisible blanket keeping it warm and safe, and the atmosphere is thick near the surface of the earth. That is why it gets thinner as we go higher up into the space. We have different layers in our atmosphere, that is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, तो ये 5 layers हैं जिसमें से हम लोग देखते हैं अगर तो troposphere is the layer closest to the surface of the earth. We live in this layer along with other animals and plants. Cloud formation, weather changes, ये सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। 80% मास ऑफ द एटमोसफियर, मास की जब हम बात करें तो मतलब जितने भी लोग हैं जिसका मास होता है, मैटर जो है 80% अर्थ का, वो हमारे एटमोसफियर में ही, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट होता है। 10 to 15 किलोमीटर सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर ये होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ओजोन लेयर होता है, विच इज मेड अप ऑफ अ गैस विच इज नोन एज ओजोन। दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। ओजोन क्या काम करता है? इट एब्जॉर्ब्स द यूवी रेडिएशन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। एंड दीज यूवी रेडिएशंस आर सो हार्मफुल, क्योंकि रेडिएशन हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा हार्मफुल ही होते हैं, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सन से आए या किसी एलिमेंट से आए, कहीं से भी है। आगे भी चल के आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऑलवेज दिस वर्ड रेडिएशन इज हार्मफुल ओनली। कीमोथेरेपी, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, ये सब रेडिएशंस के ही हैं। ओके, they can cause sunburns, irritation of eyes and skin cancer. Okay, next we have the mesosphere, that is the layer above the stratosphere is the mesosphere, that is middle में भी होता है। 35 किलोमीटर है above the stratosphere, coldest layer of the atmosphere. It contains very little quantities of oxygen, ozone and water vapor. It burns and destroys all the meteors that enter the atmosphere from space before they can strike the earth's surface. ठीक है, thermosphere, the thermosphere lies directly above the mesosphere. It is about 450 to 900 kilometers, and space shuttles orbit in this layer. Whereas exosphere, it merges with the outer space, and most of the satellites are present which keep on orbiting the earth and keep on maintaining a proper eye, or keeping a eye on the surface of the earth, the activities which are going on the surface of the earth. Properties of the air हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, और वाटर। ओके, लेट मी शो यू द पेज numbers. Basically your, so we have one of this part, this is the third one. This activity worksheet you will be getting today, again related to simple machines only. Fill in the blanks, match the columns and identify the type of simple machine in the pictures given below. Okay, followed by next part, that is I'll be showing you
You will be having air and water first worksheet here in this part. Okay, so related to this is going to help you from your examination point of view, so please prepare it nicely and please take it seriously as well. Okay, so this was all for today. Okay, I hope you would have liked the class and everything. So please don't forget to take the necessary precautions, as well as the worksheets needs to be completed, which is going to help you from your examination point of view. So this was all for today. Thanks a lot for being with me and have a superb day ahead. Thank you.